Okay, thank you. You can turn off your camera. So in today's turn, I am going to start with you, with all of you. I am going to call one by one the name of each and every student, and you need to show your georeference topo sheet and the digitization that we have performed. So it will take for a while. After once I will check the practical of all these students. I will go ahead with the polygon digitization. Meanwhile, while you are waiting for your turn, and I will start the things. Till then, you already have the PDF file of practical. Go to that PDF and learn more about the this polygon digitization along with the styling that can be done with the vector data. Okay. So now I am going to call the name one by one. First of all, Sunil Kumar. Sunil Kumar. Sunil, please confirm. Am I audible to you? Okay. Next, Jayashree. Jayesh. Yes, ma'am. 1 minute. It's loading. Okay. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon, Sunil. Sorry, ma'am. I had a problem. Yeah, okay. Jayashree is opening her practical. After that, you will open your practical and show whatever problem is taking place in digitization and other thing that you have sent me in the chat. Okay. First Jayashree, and after Jayashree, I will come. All of you just open your Quantum GIS and add the raster of topographic sheet and the vector layer of road, religious places, hut, tree. Okay, I don't know. There is Jayashree. Okay, Sunil, you can continue. There is, I think, so some problem at Jayashree end. Share your screen, Sunil Kumar. Sorry, ma'am. My system is working very slow. Please take. Okay. I'm moving to the next student. Just start your QGIS. Yes, Yashovardhan. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Is it visible? Yes, it is visible.
Okay, so place, first of all, place your cursor. No, no, don't do this. First of all, place your cursor at the top left corner. Yes, sir. Top left corner. No, you are using the digitizing tool. Don't use this one. This is the digitizing tool. Yashovardhan, at the zoom, there is a magnifying glass, zoom in, zoom out, plus, minus, and after that there is another button towards the right end, right side. Yeah, this one. Click on this. No, not this one. After the minus, cancel. Cancel this one. After the zoom, Yes, yes, this one. Plus on this, click on this one. Yeah. So this is basically all of you. See this tool. This is used to show whatever content is there on the full screen mode. So it is like zoom to layer. Yeah. Now zoom into the particular point, top left corner. Top left corner. yes, ma'am. Top left corner, so that I can see. Yes, yes. Place your cursor over there. At the intersection of lat long, 80, 81 degree 45 minutes. Yes, ma'am. Okay. Now show your digitized data. Yes, ma'am. Again, zoom to layer. Just okay. So you have done the digitization of this row. Yes, ma'am. Yashovardhan, if you continuously use this editing tool, automatically some of the points will get digitized. Randomly, they will get digitized. Use this panning tool, the hand shape tool. Yes, Pan tool. Below the setting, there is a hand. yes, This is ma'am. called the panning tool. Yes, use this pan tool. Okay, so okay, so you have done the digitization of this one node. Apart from this one, what else you have digitized? Ma'am, religious places. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, Shobhardan. You can Yes, stop ma'am. sharing. Yes. Yes, ma'am. Sunil? Yes, ma'am. Yes. Now share your screen. Sunil, share your screen. Sorry, ma'am. ये
क्या दिक्कत आ रही है स्क्रीन शेयर करने में? मैम ये शेयर कहाँ से होता है? जहाँ पर आपका एक मिनट माइक्रोफोन का एक सिंबल मिनट बना है ना, यस मैम। उसके बगल में देखिए, उसके राइट साइड देखिए एक अप साइड एरो बनी हुई है, उस पर क्लिक करिए। कर दिया? यस मैम शेयर किया, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं आ रहा मैम। शेयर यस मैम यस मैम। उसको आप सेलेक्ट करिए, स्क्रीन सेलेक्ट करिए, एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा कुछ ऐसा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए, नीचे की ओर आपका आ रहा होगा स्क्रीन शेयर, डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट विंडो। नहीं आ रहा है आपके में? मैम एक मिनट मैम। आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। यस मैम। मैम आई एम लोकेटेड दिस पॉइंट इज दिस प्लेस बट आपको प्रैक्टिकल sometime में after G44 P15 दिया गया था जियो रेफरेंस करने के लिए, वो कहाँ है? मैम P15 करने के बाद मैम वो ब्लर हो जा रहा था, इसलिए मैंने उसको आप गलत कर रहे हैं। जी। अगर ब्लर हो रहा है नो इसका मैम। मतलब जियो रेफरेंसिंग, अरे नो मैम नहीं, बता रहे हैं वही होता है। आप जियो रेफरेंसिंग गलत करेंगे तभी वो ब्लरिंग होती है, अदरवाइज कोई ब्लर नहीं होता कहीं से। ठीक है, चलो इसको, इसका ये जरा हाइट करूँ, यहाँ सामने जो आ रहा है स्टॉप शेयरिंग हाइट, हाइट हाइट पे दबाइए। जी मैम। चलिए अपना शीट दिखाइए। उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जूम इन करिए, उसका कोऑर्डिनेट दिखाइए। इस पे क्या लिखा है? 25 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है ना? जी मैम। हाँ, यस मैम। 30 लिखा है ना? जी मैम। तो ये आपने तो ये रेफरेंस गलत किया है ना, वैल्यूज गलत दिए, तभी वहां पर भी गलत हो रहा है। ये भी गलत जियो रेफरेंस है। यहाँ पर जब आप कैसा प्रेस करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आपका आना चाहिए 81.5 और 25.5। डीडी डीएमएस दोनों लास्ट लेक्चर टर्न पे आपको पूरा क्लियरली समझाया गया है। आपने डीएमएस नोटेशन दे दिया, यहाँ पर देखिए, उसको डीडी में कन्वर्ट करना चाहिए था। 81 डिग्री 30 मिनट है, ये डेसिमल में देखिए वैल्यू आ रही है आपकी, सो इट शुड बी 81.5 एंड 25.5। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो पूरा का पूरा जियो रेफरेंसिंग, चाहे ये हो P11 हो चाहे P15, आपने जो भी किया होगा वो सब गलत किया है। आप पहले ये डिग्री मिनट सेकंड नोटेशन को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और उस वैल्यू को वहां पर इनपुट किया जाता है। इसको करेक्ट करिए। ठीक है, और चलिए दूसरा आपका क्या दिक्कत आ रही थी कि आपके सारे पॉइंट्स जो रोड टेम्पल ट्री, अरे रुक जाओ भाई, जी मैम यही प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो स्क्रीन शेयर डाइवर्ट हो करो, रहा था। स्क्रीन शेयर करो।
चलिए, ये डिजिटाइजेशन आपने किसका किया था? जी मैम। ये डिजिटाइजेशन आपने किनका किया था? ये जो लाइन एक जा रही है आपकी, जो रोड जा रही है ना, डिजिटाइज रोड, ये किसको मैम आपने डिजिटाइज किया था? मैम दिस रोड। ये पलट कैसे गया ना? ये भी कुछ गलत आपने किया है। आप इसका स्लोप देखिए, ये डाउनवर्ड की स्लोप जा रहा है। आप अपना डिजिटाइज डेटा देखिए, वो किधर जा रहा है? ये देखिए, ये सीधा जा करके ऊपर उठा है ना? आप अगर यस लेफ्ट टू मैम। राइट जियो मूव कर रेफरेंसिंग। रहे हैं, वो स्ट्रेट जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। सुनील, यस मैम। आप दोनों, जियो रेफरेंसिंग का भी इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और प्रीवियस टर्म का डिजिटाइजेशन का भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उन दोनों रिकॉर्डिंग्स जी को मैम। पहले रेफर करिए, क्योंकि आप काफी चीजें गलत कर रहे हैं अभी। उन दोनों रिकॉर्डिंग्स को पहले देखिए और देखने के बाद इस डिजिटाइजेशन को करिए, ठीक है? ओके मैम। इसको हम आपका नेक्स्ट टर्न पे फिर से चेक करेंगे। ओके मैम। नेक्स्ट, सुमित, Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर करिए। Ma'am, there is one problem, ma'am. Ma'am, I'm not getting my particular file which I have done in georeferencing. That means that digitizing part. Ma'am, I'm searching that, but I'm not getting. Ma'am, see, I have done here. I have these hertz and trees, but I'm not getting that particular file which I have done means on the original file, ma'am. Sumit, there is only one file. In the georeferencing, you have to do the georeferencing of G44P15, isn't it? So first you need to open G44P15 and afterwards you need to open all these shape files over that one. Ma'am, this modified one or original one, ma'am? Why are you not using the common sense? Tell me. Why anyone will open the non-georeferenced topo sheet? No, it will be of no use. You have to open the modified one only. Because all the things, all the digitization, even if I am going to check your georeferencing, I need your modified file. Okay. And if you are doing the digitization, again, you need to perform it on the georeferenced file. So it's just a raw data, the original raw data. That's it. Now zoom into the corner, top left corner. Yes, okay. Now place your cursor over the intersection of lat long 81, 45, 25, 30. This one? Yes, okay. Now add your digitized data over this one. Ma'am, how to do that? Can you please tell me? Layer, add vector layer. Go to layer. Then, ma'am, document when the file is No, being saved. go to your shape file. Where is the shape file? And these files. Just wait for a while. There is a lag on the screen. Right. Yes. Now open the .shp file. Instead of taking on the file name, there is all files, isn't it? So open this drop down menu, all files. This. Just wait for a while. So select ISRI shape files.
And should I select all the shape files? Now, just wait for a minute. Yeah. Now you need to select all the shape files. We have created two shape files: huts, roads. Why? Ma'am, I think that was second sheet at which I was doing. That is why. Ma'am, I'm selecting one. I don't know. Ma'am, add. Yes, add, then close. Zoom into the digitized row. Ma'am, it is not being shown. It is taking time, ma'am. No, there is something mistake. No. There is no. Stop doing anything. You have done some mistake in digitization. Why the coordinate is -850 and -815? I It think means that you have not done the this digitization thing on the georeference sheet. Sumit, have you ensured this thing that you are doing the digitization on the georeference map only? Yes, ma'am. I was doing on that only. Maybe some problem. Maybe some error because of some error. No. There cannot be any error. Just uncheck the hertz and right click on the roads. Right click on the road. Right click. First option, zoom to layer. Ma'am, it is not coming only. So, but I think so you have done some major mistakes in the digitization process. Again, I will suggest you the same thing that I have already suggested to Sunil. Go to the digitization recording. Okay. See that recording again. And what I am getting that we are doing fundamental mistakes in digitization. Like whatever you are showing to me right now, the HUD and other things, it is appearing to me that you have done the digitization on a non-georeference topo. That's why the things are coming randomly. And now you are showing road and no road is coming. It means that you may not have saved the digitization. After doing the digitization, you need to save the edits. You need to save the digitization. So it might be that you have not saved this road. Okay, ma'am. So this whole digitization is completely wrong. And perform this digitization again, and I will check it on next laboratory session. Okay. Okay, next, Sudhir. Sudhir, have I checked your lab? I think so. I have already checked your Yes, ma'am. output, Last time. isn't it? Yes, please. Yes. There is no need to share them. Okay, thank you. Next, Shubham. Yes, Shubham, share your screen. I have shared my screen. Okay. So first check on this P15 modify. Place your cursor on the top left corner. Okay. So now show your digitized data. Okay. Zoom into the road. Now turn on this P15 modify.
Right click on the road. I have to No. copy coordinates. Escape. No. Press escape. Escape. Okay. Escape. Yes, escape button on the keyboard. Yes. Now go to the road. Yes, right click on this road. Right click on the road and go to properties. Last one, yes. Uh, you know, please wait, just wait. Change the color to yellow. No, not in this section, just above. There is width, color, yes. Change the color to yellow. Yellow. I think I have selected yellow. Yes, you can go, just below the select color, there are 4 options. Just place, yes. Here, Yes. Color wheel. yellow. I have selected yellow now. Click OK. Just click. Yes. Now zoom in. Okay. Yes, Shem, you have. There is a mistake. Be careful from the next time. That always do the digitization along the central line. Okay. So what you have done the digitization correctly, but there is a. If you see the accuracy of this digitization, it is not very good because it is sometimes going towards left and sometimes towards the right. Okay. Move towards the right hand side. Scroll towards the right hand side. More or less it's good, it's okay, but you can see like right now you can see that some of the places it is going to completely left hand side and completely right hand side. Yes, ma'am. So be careful for the next time, but it's okay, you have done the whole digitization as well as referencing correctly. Good. Next, Rahul Kumar. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, is it visible? Hello, ma'am. Yes, Rahul. Ma'am, it is visible? Rahul, your audio is not clear to me. Yes, ma'am. Okay, it's okay. Yes, ma'am. Show your digitized data. Ma'am, I digitized, but the file is saved in format like SHP, EVF, and PRG. Ma'am, I open it, but it is not. Rahul, your audio is not clear. You just need to open the shapefile, and if you have to open the shapefile, you need to select .shp file. Okay. .shp. Ma'am. Yes, only .shp. It's like invalid layer. Open it again.
Open it again. Okay, ma'am. You are going to the raster data. Rahul, Yes, ma'am. see, you are selecting the raster data set, isn't it? You need to. Yes, ma'am. Why are you closing it again and again? Go to the layer. Yes, ma'am. Layer. Click on the layer. Yes, ma'am. Layer. Click even. It is not appearing in front of me. I don't know whether it is open or not. Go to the layer. Go to the add layer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Add layer. Then go to the vector. You have already selected the raster. Just above the raster, there is a Okay. vector option. Yes. Yes. Okay, ma'am. Now select the shapefile, not PRJ file. Just first of all delete that one. Delete first of all .prj over there. Just cancel it. Rahul, Yes, ma'am. cancel this thing first. Okay, ma'am. I'm doing. One minute, ma'am. Yes. Now delete this first. Yeah. Now. Just You know, click on- instead of taking all files, go to the history shapefile first. Just adjacent to file name, there is an option all files is selected over here. Instead of taking all files, Yes, ma'am. take history shapefile option. Ma'am, where is it? There is file name. Rahul, you are not listening the things carefully. First listen them instead of clicking it. Okay. Don't close the things. Don't Okay. close the things. You are working correctly. Listen the things carefully first. Yes, ma'am. Now click on this browse button. There are 3 dots. Click on that one. Yes, ma'am. There is file name. Don't scroll on that screen. Okay, ma'am. Just above this open button, there is all files option. Yes, ma'am. Click on that drop down menu. Yes, ma'am. Select history shapefile. This one, ma'am. Yes. Now open your shapefiles that you have done that you have digitized. Okay, ma'am. Add, close. First add, then close. Yes, ma'am. This one, ma'am. Visible. I cannot see where have you done the digitization. Just zoom in to that place. It's not showing, ma'am. No, there is no digitized data. That one I have done. Digitization. Ma'am, can I try after some time? So, hey Rahul, what are you saying? Ma'am, can I try after some time? No. Have you done the digitization or not? Yes, ma'am, I'm done, but I don't know. I did not showing. I think file ma'am Because name. if you have done, then it should come. Just open some other shapefile. Instead of root, you have done the digitization of some point features also. Okay, ma'am.
Now do one thing, go to the view. Rahul, Yes, ma'am. yes, click on the view. Okay, ma'am. Click on it. There is panel option over there. Yes, ma'am. And there is layers. Inside the panel, there is a layers option. Check on the layers. Yes, ma'am. Okay. Now right click on the road. It's not fine, ma'am. Rahul, right click on the road. Yes, ma'am. In the layer section, there is a road. What are you doing? Why are you scrolling on the map? Right click on the road. Yes. In the layers. Yes. Right click on the road. Yes, ma'am. Right click. Yes, ma'am. Right click. Okay, nothing is coming right now. Click on zoom to layer. Same mistake. Why? I don't know what you people are doing in the last laboratory session. Majority of you have done the incorrect digitization. See what you have done. See the coordinates that are coming for this road section. Your digitization is completely incorrect, okay? Yes, ma'am. And see the name of the shapefile that you have given, temple, comma, well, comma, tree. When you are giving the name of any file, we do not use this special character, comma, and other things. If you have to use anything, use underscore in that case. Your digitization is completely wrong. Show it next time, okay? Okay, ma'am. Next, Shivam, have you shown your output? Yes, ma'am. Okay, then Shubham. Shubham, Yes, ma'am. have I you have shown your shown. output? Yes, ma'am. Both Shubham and Shivam, both of you have shown it? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ठीक है ना, मैं Shivam. show कर रहा हूँ. Okay, after me. Okay, I got confused between your names. So Shubham was okay. He has done both the things correctly. Now this is Shivam. Okay. Shivam, first of all, show your georeferenced file. कौन हुआ? शिवम मुना. आप शिवम आप शेयर कर रहे हैं ना स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके. शिवम आपका वो कहाँ पर आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर आ रहे हैं? मैम जैसी लेयर्स, मैम न्यू शेप लेयर सेट करी मैम, ऐसे ही गायब हो गए. आप इसको क्लोज करो, फिर से QGIS खोलो और केवल अपना जियो रेफरेंस मैप पहले दिखाओ. ओके.
Okay. Okay, now add your shapefile. Your georeferencing is okay. शिवम, आपकी जियोरेफरेंसिंग ठीक है? इसमें अपना जो शेप फाइल है, जो डिजिटाइज डेटा है, उसको ऐड कराइए। नहीं, ये किस तरह से आप खोल रहे हैं शिवम? उसी के ऊपर शेप फाइल क्यों नहीं ऐड कराई आपने? शिवम, अपने को अनम्यूट करिए। जी मैम। हाँ, आपको बोल रहे थे ना, वो आपने जियो रेफरेंस टोको शीट थी, है ना, इसी जी। के ऊपर ऐड कराइए अपनी शेप फाइल। जैसे कहाँ बाकी से? स्टूडेंट्स है, लेयर में जाइए। देखिए, ये बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें, ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे सबको। आप जो फाइल्स सेव करते हैं, चाहे आप जियो रेफरेंस मैप सेव करें, वो .tif में होता है, शेप फाइल्स अलग होती हैं। आप लोग QGIS का ये जो विंडो है उसको सेव कर लेते हैं और फिर बोलते हैं मेरा डेटा नहीं ओपन हो रहा। हम डायरेक्टली अपना रास्टर लेयर और वेक्टर लेयर यहाँ से ऐड कराते हैं। जैसे इनका है, ऐड लेयर में जाकर के ऐड वेक्टर लेयर करिए। फर्स्ट ऑप्शन, ऐड वेक्टर लेयर। यस, ब्राउज करके आपका जो भी डिजिटाइज डेटा है उसको ओपन करिए। शेप फाइल कहाँ बनाई है? नहीं, डॉट ये क्या है? QGZ नहीं होता, .shp होता है। आपने अपनी शेप फाइल कहाँ सेव करी है? मैम शिवम, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। मैप्स के फोल्डर में मैम। यहाँ तो नहीं है कोई शेप फाइल। नहीं, क्या वो जी शिवम, रिपीट करिए, ऑडियो आपका ब्रेक हो जा रहा है। मैम, क्या उस पीरियड में शिवम, आपको ऑडियो मेरे पास नहीं आ पा रहा है, वो बीच में ब्रेक हो जा रहा है। QGZ ये कोई आपका नहीं होता, ये आपने जो जब आप क्लोज करते हैं QGIS, तब वो प्रोजेक्ट सेव करने के लिए बोलता है। इसमें हम लोग जब जी शेप फाइल बनाते हैं वो इसरी शेप फाइल फॉर्मेट में बनाते हैं। अगर आप ऑल फाइल्स में इसरी शेप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो उसको लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वो डेटा कहाँ पर है? जब आपने शेप फाइल बनाई थी तो वो कहाँ पर जाकर सेव करी थी? मैम हाईवे के नाम से मैम यही सेव मैम क्या ये तो प्रोजेक्ट है ना, शेप फाइल अलग सेव होती है। आपने शेप फाइल बनाई नहीं है क्या? बनाई? मैम डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे तो शायद मिले वहाँ, बाय डिफॉल्ट वहीं जाता है मैम। चेक करिए भाई शिवम, डॉक्यूमेंट्स में चेक करिए। आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कंप्यूटर पे काम नहीं किया। कभी भी कोई फाइल सेव करते हो तो सेव करते टाइम तो फाइल की लोकेशन डालते हो ना। उसमें कौन सी इतना मतलब ऐसा चीज हो गया कि आपको अपने फाइल का लोकेशन तक नहीं पता लग रहा है? यस, आपने डॉक्यूमेंट्स में ले जाकर सेव किया हुआ है।
बाकी स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी से करके रखिए, क्योंकि अदरवाइज लैब आज हो नहीं पाएगी, अभी 3 बजने को हो रहे हैं। सब लोग अपना अपना ये सारा डेटा ओपन करके रखें, और ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए इस लेवल पर, ये आप लोग देखिए कि अपना फाइल आप लोग कहाँ सेव कर रहे हैं। ये शिवम दिखाइए, ये क्या है? मैम रिवर। रिवर लाइन से कैसे दिखा रहे हैं आप? टोपो शीट ओपन करिए। यस, इसमें आपको क्या लाइन से रिवर दिख रही है? हाँ, बताइए शिवम, आपको क्या रिवर किसी लाइन से बनी हुई दिख रही है? नो मैम। हाँ, नो ना? आपको मैप पे देख करके समझ नहीं आ रहा? आपके सामने रिवर खुली हुई है, रिवर गंगा, रिवर यमुना। अब मैप देख रहे हो, आपको क्या रिवर लाइन में दिख रही है? नो। फिर जब लाइन में नहीं दिख रही तो उसका डिजिटाइजेशन लाइन से कैसे कर दिया है? क्या आपको एक बार बोला गया था डिजिटाइजेशन कराते वक्त कि रिवर को आप लाइन लेकर के डिजिटाइज करिए? मैम एक्सप्रेस हाईवे है मैम ये एक्चुअली। हाँ, दिस वन मैम। क्या दिखा रहे हैं इसमें शिवम मुझे? मैम एक्सप्रेस हाईवे दिस एक्सप्रेस हाईवे आपने किया कहाँ है? आपने तो रिवर करी हुई है ना, हाईवे तो आपका आया ही नहीं है, आपने तो रिवर दिखाई है। और रिवर मैम आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो लाइन नहीं, वो एक पॉलीगन है, वो एक एरिया कवर कर रही है। जी मैम। मैम तो मैंने फिर रीनेम रिवर लिखा था, रीनेम करके लिखा था मैंने। तो पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ नहीं रही है मुझे समझ में। अगर आप रिवर का, आपके शायद ये कह रहे हैं कि आपने गलती से रिवर नाम लिखा है, लेकिन वो रिवर नहीं एक्सप्रेस वे है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? जी मैम। तो दिखाइए कहाँ पर है वो एक्सप्रेस वे। आपका क्या रिवर यमुना हाईवे हो गया है क्या? बताइए शिवम। मैम कंफ्यूज है मैम, क्या है ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सब गलत सलत किया है, और करते टाइम थोड़ा सा सोचा करिए, ठीक है? करते जी टाइम मैम। अगर आप सोचेंगे नहीं, मतलब इट्स लाइक बोला गया इसको, इस बटन को उठाओ और इस बटन को दबा दो, बस इस तरीके से काम करेंगे तो इस तरीके की पता नहीं, मतलब आपने ये सोचा ही नहीं कि हाईवे में रिवर के अंदर बना रहा हूँ, आपने ये सोचा ही नहीं कि रिवर तो एक पॉलीगन है, मैं उसे लाइन से बना रहा हूँ। सो अगर आप सोचेंगे नहीं तो फिर आप इस तरीके का जो एक फंडामेंटल मिस्टेक है, जो हो ही नहीं सकता, आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से लैब ध्यान से अटेंड करिए, और लैब करने के बाद जब आप उसे एग्जीक्यूट करें, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, उस समय थोड़ा सा सोच करके करिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ाया गया है, क्या थ्योरी में सिखाया गया है, और आप जो काम कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है? जब आप ध्यान देकर करोगे तो इस तरीके की मिस्टेक नहीं होगी, आप इसको करेक्ट करिएगा और नेक्स्ट टाइम दिखाइएगा। ओके, चलिए ओके सर। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पारुल सिंह। Yes, ma'am. ओके, इट्स ओके पारुल। Okay. नेक्स्ट भगत कुमार। यस मैम।
Am I audible? Yes, you are audible, Bhagat. Share your screen. Yes, ma'am. Yes. Place your cursor at the top left corner. ठीक है. डिजिटाइजेशन में क्या किया है? I added a few temples, tree, and 2 road. Okay, zoom into the road. All of you always be careful. I have seen many students who are doing this mistake. If your digitization is on, right now if you can see on the Bhagat screen, that is digitization. Yes, this tool is on. So if you do not turn it off, then automatically some points will be marked randomly on the screen, on the map. Okay. Yes, So ma'am. always make sure that you are using this pan tool while scrolling on the screen. This hand shape tool is called the pan tool. हाथ वाला जो सिंबल है ये pan tool होता है और इसी टूल को इंश्योर करिए कि हमेशा इस टूल को ही लेकर के स्क्रीन पे करें. अगर वो पॉइंट मार्क वगैरह का आप टूल यूज करेंगे तो रैंडमली कहीं कहीं पे पॉइंट मार्क होते रहेंगे. चलिए अब इसको स्क्रॉल टुवर्ड्स राइट करिए, राइट साइड की ओर स्क्रॉल करते जाइए. Same. Bhagat, your digitization is okay, but just be careful to be along the central line. But I can see that you have make a lot of effort to follow the central line. So Yes, ma'am. yes, I can see that effort, but still be careful that you go along the central line. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Okay. Next, Thank you. Arun. Thank you. Welcome. Yes, ma'am. Is it visible now? Yes. Yes, ma'am. P15 sheet and lat long cross section 81 degree 45, and my coordinate is 81.72 something. Okay. And here I point some trees, road is here, and hut including temple, church, mosque, all. There's one tree here. This is all temples. And ma'am, here is my road. Scroll towards right. Right side. Ma'am, I just end here. You need to digitize the complete road. Okay. Yes, ma'am. Not just a small part of the road. You need to digitize the whole road, and yes, you are deviating from the center line. So make sure that you are digitizing along the center line. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next, Alok Kumar. Yes, ma'am. Ma'am, is it visible? No, Alok, it is not visible right now. Yes, it is visible now. Okay, ma'am. Okay. Place your cursor on the top left corner. Okay. Then show your road. It's okay, Alok. Zoom to the road. Wait a minute. कौन सा?
Ma'am, can you see that? Okay. Yes. Scroll towards the right. यहाँ कहाँ है? एक मिनट रुकिए। मैम आप पूरे अपने इसको अनचेक करिए जरा एक बार, रुक जाइए। अपना टोपो शीट अनचेक करिए। अच्छा ठीक ठीक आ गया, ठीक है। आलोक, यस मैम। आप देखो यहाँ पे जैसे कर्व वगैरह है ना, आपने इसको और पॉइंट्स लेना चाहिए था जिससे कि जो उसका शेप है वो सही से आए। आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मार्क किए हैं वो कम करे हैं, उसको और बढ़ाइए। मतलब अगली जो भी रोड या लाइन, आप दूसरी कोई भी लाइन फीचर डिजिटाइज करें, उससे मेक श्योर करिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा लीजिए, और जो सेंट्रल लाइन वाली चीज़ कही गई है उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपका सेंट्रल लाइन से डेविएशन हो सकता है। मैम आई हैव टू आस्क वन थिंग। यस मैम, ये सारे ट्री हट दिख रहे हैं, लेकिन ये रिलीजियस प्लेसेस मैम जब मैंने प्रोजेक्ट सेव किया था तब दिख रहे थे, और अभी थोड़ी देर पहले चेक करने के लिए खोला था तब भी दिख रहे थे, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है ये, लेकिन पीछे आ रहे हैं इसके जब मैं अनचेक करता हूँ। आप ऐसे सोचो, आपने कुछ एक पॉइंट रखा, ठीक है, ओके मैम। और उसके ऊपर एक पेपर रख दिया, ठीक है। सपोज Yes. कुछ पिन्स आपने रख दी टेबल के ऊपर और उसके ऊपर एक पेपर रख दिया, क्या आप उस पिन को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आप क्या करेंगे, जो पेपर है पहले उसको नीचे रखेंगे और उसके ऊपर उन पिन्स को लगाएंगे। यही चीज यहाँ पर हो रही है कि जब भी आप यहाँ पर अरेंज करते हैं तो हमेशा एक सीक्वेंस होता है। सबसे नीचे रास्टर लेयर का लगाया जाता है, उसके ऊपर पॉलीगन लेयर, देन लाइन लेयर एंड फाइनली पॉइंट लेयर। तो इसको जेड ऑर्डरिंग कहा जाता है यहाँ पर। इसीलिए आप लेफ्ट पैनल में देखेंगे आपने जियो रेफरेंस P15 शीट को रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर रख दिया है। आप एक बार उसको ड्रैग करके नीचे कर रखिए, जियो रेफरेंस P15 को ड्रैग करके, हाँ छोड़ दीजिए। ओके नेक्स्ट, yes, Jayashree. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, is this visible? No, Jayashree, it's not visible. Ma'am, is it visible? Yes, it is visible now. Okay. Next is road. Okay, show your road. Ma'am, this blue color line. Right click. Okay, wait for a minute. Right click on the road. In the left hand side in the layer panels, right click on the road.
In the left hand side, in the layer panel, there is a road. Right click on that road. Go to the properties. Why are you unchecking it? I am saying you right click on the road, go to the properties. Yes, change the color. Take yellow, change the color to yellow. Click on the color, there will be a drop down. Yes, okay. So orange is okay, and increase the width. It's 0.26, increase it to 0.36. 0.46. Okay. Okay. Press on the OK button. No, your orange color is again not visible. Change the color. Give it a black color. Jayashri, Ma'am. if you see the starting point, Yes, ma'am. Here. there is a duplication of line. Yes, ma'am. Why have you not removed that one? Yeah. Scroll down. You have not digitized the complete road. No, ma'am. Missing some individual part. No, this is not a correct way of digitization. When you do the digitization, you need to do it completely. From top to bottom and left to right. Complete. You cannot do a partial, you cannot do this partial digitization over there, okay? Okay, ma'am. So complete this thing and I will check it for the next time, okay? Okay. So I think so. I have seen the laboratory. I think so. Is there anybody left? No. So I think so. All of you have shown your outputs, and what I am getting that there are a lot of basic mistakes when you are doing this laboratory. Okay. So as I have told you so many times in the lecture session and in the laboratory session, that if you have any confusion, okay, any sort of confusion, then ask that thing immediately. Don't wait. Okay, don't do this type of basic mistake. Otherwise, you are not going to get any output, and it is very difficult to see your results in the online mode because nothing is in my control. I am just saying repeatedly, do this, do that, and all that thing. So the checking is also very limited. Therefore, you need to make sure that you are doing the things correctly. If there is any confusion, ask all those things immediately. Means rest of the things are okay, but I do not know how you people can do the digitization on a non-georeference topo sheet. It will happen only if you haven't heard this thing, because I have repeatedly told you the same thing in the last turn, that digitization will take place only on the georeference topo sheet. Okay. So these type of mistakes are not acceptable. Make sure that you are not performing these mistakes in the next turn. There are few things that I have found. Yes. Yes, ma'am. Please see. I am georeferencing in P15. Please see one time, ma'am. I'm not getting. क्या हो गया सुनील? क्या दिक्कत है आपको? मैम
मैंने जियो रेफरेंसिंग किया तो एक बार मैम सीन कर लेती है आप। उसको कर्सर को वहां पर कॉर्नर पे प्लेस करो, देखो 80 81.75 एंड 25.3 आ रहा है कि नहीं, या जो भी वहां के कोऑर्डिनेट हैं। करिए, स्क्रीन शेयर करिए अपना। यस, इट्स ओके सुनील। एंड मैम ये सम पॉइंट और करिए, इसको पूरा करिए पहले, तब पता लगेगा। इसका पूरा रोड का भी आपने किया हुआ दिख रहा है मुझे अभी, इसको पूरा कर लीजिए। Okay, so now I am going to start the laboratory session. First, I would like to I want to discuss few things, few mistakes that I found in some of the students. First thing is that you need to place all your data set in a very proper way. Some of the students are placing it on the desktop only. Some of them placing them simply in the document or wherever they are going. Okay? Don't do this thing because the things will get messed up. There are 5 files that are generated when you create a single shape file. So there will be so many files, and later on it will create a lot of confusion over there. Therefore, make sure that you do the things in a very systematic manner. Like there must be a first folder should be of practical one. So if you go inside that practical one folder, you will get this G44P15 topo sheet and the georeference topo sheet of that as well. If you go to the practical 2, you will find all the shape files over there. So this is my suggestion to all of you. This is a general suggestion. It is not just about this GIS laboratory or other thing. It is a general way. Always arrange your material in a very proper way, in a very systematic way. आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे कोर्स वर्क कर रहे हो, चाहे थीसिस वर्क कर रहे हो, आगे चल करके नेक्स्ट ईयर से करोगे, वर्क को प्रॉपरली अरेंज करना बहुत जरूरी है। ये एक आदत होती है कि सब चीज उठाकर डेस्कटॉप में डाल देना, डॉक्यूमेंट्स में डाल देना, डाउनलोड्स में छोड़ देना, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है। ये इस तरीके से अगर आप यहाँ पर लैब करेंगे तो चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी। Okay, so make sure that you store all the things in a very systematic manner, with a proper naming convention. Okay. Second thing is related to the naming convention. Whenever you create a shapefile or any other file, it is a general suggestion that you must not use any of these special character except underscore. Okay, except underscore, do not use any comma, hash, ampersand and other things. Name your shapefile properly. That will represent whatever feature is digitized inside that shapefile. Okay. Another confusion that I found in the students is, as you can see on my screen, I am adding, I am going to create a new shapefile layer like this. Okay. Layer, create layer, new shapefile layer. Okay. Now, when you are naming it, you can see over here, this panel get open. You need to give the name of the shapefile. If you randomly give name over here like this, then you will not know, you will never know where it is going to get saved. There are 3 dots over here for the browse. Click on that one. And whichever browser you are working on, like I'm working inside the desktop, there will be a GIS folder. Inside the GIS folder,
I have my lab folder. Inside the lab folder, I have practical 2, practical 3 and other things. Okay. So inside the practical 3, there is a road shape file. Suppose I want to create a river shape file over here. Simply write it down like this way. So the content will get arranged properly and the naming convention should also be correct. Okay. So I hope everybody is getting that where the document or where the shapefile will get saved. You have to browse it to the proper folder where you will save your shapefile. Okay. So once you have given the folder, the location, okay, you can see it over here. I have given a proper location. I have given the name of the file and then geometry for the river. I am going to take polygon. Then I need to give the coordinate reference system, CRS. So it is already over here. Now for the attribute, I am adding name, text data. Okay. Just click OK. So this is how the shapefile will get created over here. Another thing, many times the student what used to do when they close this QGIS interface, they will ask, do you want to save the current project? There is no need to save this thing. Why? Because your georeference topo sheet is saved, your shapefiles are saved. There is no need to save this interface. What is the use of this particular interface? Okay, we used to save this thing, but the purpose is that suppose I have added a topo sheet, I have added few maps and other things. So when I save this project, all the shapefiles and all the georeference sheet, whatever is opened currently on the screen, will get opened. Okay. ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि अगर आपने सेव प्रोजेक्ट कर दिया तो आपकी शेप फाइल सेव हो जाएगी, आपका जियोरेफरेंस टोपो शीट सेव हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तो आप इसको सेव करिए मत करिए, इसका कोई मैटर नहीं होता. इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने जो भी शेप फाइल्स यहाँ पर ऐड करी है, जो भी टोपो शीट यहाँ पर ऐड करी है, जब आप उस प्रोजेक्ट को वापस से खोलते हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड अप हो जाते हैं, स्क्रीन पर आ जाते हैं. अदरवाइज अगर आप इसको डिस्कार्ड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको वापस से जाकर के ऐड कराना पड़ेगा. Just wait for a minute. So I'm going to add the georeference topo sheet. Okay. From this add layer. Okay. There was another confusion. If you have to add the raster data, in that case you will select this one, raster option. Okay. So I'm clicking on the add raster, and now I will open my georeference topo sheet. Where it will be placed, it will be inside the practical 2. Okay. So you can see how this thing will help. I know I do not need to search it anywhere because I have done this thing in the practical 2. Therefore, so now you can see this P15 topo sheet over here. Now, is there any lag in the screen? Is there any lag between audio and the video? No, ma'am. No, ma'am. Now I am going to add the vector layer like this way. Layer, add vector layer. And one more thing, you can see this thing on the left hand side panel. Inside the browser, there is vector, there is raster, there is mesh, and so many options are there. But we are not interested in the other options. We are mainly interested in raster and vector. So if you want to add the raster data, you can select the raster option. If you want to open the vector data, in that case, you can click on the
vector over here. And once you have click on the vector, you need to add the vector layer. Again, I need to add my river shapefile, and where it will be inside the practical 3. Okay. So I will go inside the practical 3, and after that click on this one. Okay. Many times you people get confused. There are so many files over there. इतनी सारी फाइल में से हमें कौन सी फाइल लेनी है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करिए, ऑल फाइल्स. There is history shape file over here. Okay, so select the history shape file. Automatically only .shp files will appear on the screen. I will take river and close. Now, if you see on the map, the river is like a polygon over here. Why? Because it is not represented just by a line, it is covering an area. That's why the river need to be digitized like a polygon. The process will be same. You need to click on the toggle edit. Okay, and once you enable the toggle edit, just wait for a minute. Yes, this add polygon feature will be used. Now see, when you perform the digitization of a polygon, automatically the first and the last point are connected. Okay, as you can see on the screen, the first and the last point are connected. Therefore, when you double click at any of the points, sorry, when you ends any of the feature, automatically first and the last point will get joined. First, I will remove this particular. You know, the digitization of a polygon is a little bit difficult. And since if you do the digitization of this river, it will take some time. So you have to be very patient. And if you do not complete that digitization, then everything will get wasted. So how you will do this digitization? See this thing. Okay. Look. So I am starting the digitization of river Ganga from one end. And you will find that the boundary of this river, the river Ganga is a natural feature, therefore the boundary will not be very well defined. At several places you need to mark the things by your own judgment. Okay. So this is how you need to do the digitization. You can change the zoom level as per the requirement. Okay, like
at this particular place, there is a confusion whether I will go at the right hand side towards this white area or shall I continue along the sand. So this dot thing is a sand, so I will continue towards it. The digitization of a natural feature is a little bit difficult as compared to the man-made feature, okay? So I am not going to take much time. I'm going to do this thing quickly, but you people need to do the digitization properly. So if there is mistake, like you can see over here, I have done one of the mistake. So I will come back to the correct place and do the digitization later on. Do the correction later on. So I'm doing this digitization very roughly because and if even there is some mistake, do not try to correct it right now. Just complete the digitization first. Later on, by using the edit vertex tool, you can correct whatever mistake has been done while digitization. So I'm doing this thing very roughly. Don't do your digitization like this way. I'm doing this because it will take a lot of time in this digitization, at least half an hour for this whole river Ganga Yamuna digitization. So I'm just quickly completing it. And finally, at this particular point, I have done the right click. So ID will be, suppose I am giving ID as 01 and name will be river Ganga. Okay. Now after doing this, like there are some of the mistakes. So what I will do, I will use the vertex tool. Like I have done the ending incorrectly. I need one. Okay. So you need to drag the things at the correct position. Like at here also, there is a spike. नीचे की ओर point गलत mark हो गया है. So what I will do, I will again use this edit vertex tool and place it properly on the bottom like this. There is another mistake over here. Again. Okay, so this is how you will do the correction if there is any mistake in the digitization with the help of this edit vertex tool. Once you have done this digitization, click on the save layer edits and this stop. You can uncheck this toggle editing. Now you can see the river color is coming in brown. Okay, so the correct color for the river should be blue. How we can do this thing? So what you will do, you need to go to the layer panel. If the layer panel is not coming, okay, if the layer panel is not coming on your screen, although I have seen in most of you the layer panel was there. So in any of the case, if it disappears, then how you will get this layer panel? You need to go to the view. Inside the view there is a panel, okay, and within the panel there is layers. So you need to check on this layers option. So once you will check on the layer panel, automatically the layer panel will appear on the left hand side. Okay. Now let's see
how to give a proper symbol to any of the feature. Although you people have seen how the feature color was changed in during the second process, but right now I will show you how to do this thing. Right click on the shapefile that is coming in the left hand side panel, and then afterwards go to the properties. Okay. So once I have gone to the properties, okay, so this is the property interface, and inside this there is a symbology. Okay. You can see it over here. Right click करेंगे, properties में आएंगे, and properties के अंदर आपको ये symbology मिलेगी. ओके, यहाँ पर आप कलर डिसाइड कर सकते हैं. कलर देने के बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं. एक यहाँ से सिंपल कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इसको ड्रैग करके. यू कैन गो टू द कलर व्हील. ओके, यू कैन गो टू द कलर व्हील एंड सेलेक्ट एनी ऑफ द कलर. देन देयर इज कलर standard colors over here. You can select any of the standard color, or you can use this picker. So you just need to place this picker on any of the color, automatically it will take the color. Okay. So there are so many different, because the visualization is a very important part of GIS. We use this symbology for giving a very proper color, and color is not just only about the fill color, it is about the outside border, it is about the labeling, about the font, about the placement of the labeling, and so many other things. So we will cover that thing later on, but right now you can just see, like, we are reading about the river. So I have done the digitization of rivers, so I will give it a blue color. Okay. So simply apply, and okay. Now you can see the river color has been changed. Okay. So there are so many options over here through which you can give the different symbols inside this place. And this is how the digitization will be done. Okay. So in this session, I am not going to cover any more topic. There are sufficient number of things that you need to digitize: a point, a line, and a polygon. Okay. Write down in your copy. Inside in your copy, write it down. What you need to digitize? You need to digitize in point, okay. First thing is point. In point, number one, you need to digitize trees and at least 25. Second thing is that you need to digitize religious Next, you need to digitize polyline. For polyline, first is road. At least 3 roads need to be digitized. Second thing is railway line.
least 2 railway lines. Finally, there will be polygon. So this is what you need to do on G44 P15, not 14. And G44 P15, you need to digitize points. First, trees, at least 25 trees. Second, religious places, at least 25 religious places. And huts, at least 25. Then in polyline, there will be 2 feature, road and railway line, 3 road, any 3 road, and any 2 railway lines. Then in polygon, you need to digitize river. There will be 2 river, river Ganga and river Yamuna. Both will be digitized separately. And then there is a urban settlement. What is urban settlement? So I think so all of you have written this thing down in your copy. Anybody? What will be the urban settlement on this topo sheet? Ma'am, buildings inside the city. Yes. So as you can see on this topo sheet, there is a small agglomeration of all the buildings. So you will digitize this polygon, okay? This particular polygon of Allahabad city area as the, okay, I will just show you. So this particular area like the urban settlement. Okay. So this is how you will do the digitization of point, line and polygon. All the digitization will be done on G44 P15. If you have any confusion, write down in the chat. I will explain the things. And in the next practical session, complete this whole practical which is given to you. Okay. And then you will learn about small things regarding symbology and other things. There is one PDF also that I have given you for the symbology. It is already uploaded over there. Excuse me, ma'am. Yes. Can you show one more time how to delete the error part which by mistake we do in that polygon one? Okay. This vector layer styling PDF. All of you read this particular PDF, vector layer styling, before coming to the next practical session. Already the things are explained in this PDF. I will see how many of you have done your styling according to this vector layer styling PDF. Now there is one question regarding the error removal, and suppose the question is, I think so, that if you have marked something incorrectly on the topo sheet, how to correct that thing, isn't it, Sumit? Yes, ma'am. Okay, this is your question. Okay. Now Yes. suppose, yes, suppose this particular point
First, wait a minute. I will. So since if you give blue color or something like that, it will the topo sheet, the details of the topo sheet will not appear. Therefore, it is better to take no color. So I have given the opacity of say 15%. Okay. Now you can see that some of the portion like this point is coming inside the river. ये रिवर के अंदर आ जा रहा है और हमको क्या करना है, इसको रिवर के बाहर लेकर के जाना है. What I will do? So I will simply click on it once and then place it on the border. Similarly, ये पॉइंट जो है वो रिवर के बाहर जा रहा है. एक बार क्लिक करिए, ये मैरून कलर का हो जा रहा है या पिंक कलर का हो जा रहा है, उसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए. ठीक है, क्लियर है सुमित आपको? सॉरी, शेप सेव कैसे करेंगे मैम? कोई भी शेप अगर सेव करनी, सेव लेकर यहाँ पर टॉगलिंग के राइट साइड में देखिए सेव लेयर एडिट्स आ रहा है. ओके, क्लिक ऑन द सेव लेयर एडिट्स. वो ऑटोमेटिकली, चाहे आपने कोई नया शेप, नया फीचर डिजिटाइज किया हो या किसी एग्जिस्टिंग फीचर का करेक्शन किया हो, वर्टेक्स मूव करा करके, वो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी. मैम. यस मैम, ये अर्बन सेटलमेंट की बाउंड्री कैसे डिफाइन करेंगे मैम? क्योंकि मैम इसमें मैम क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैम कितना एरिया को. यस, वो आपको एरिया नहीं दिया रहेगा. यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, खुद से एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है कि यहाँ पर कितना एरिया, क्योंकि कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी. अगर हम यस मैम. तो अगर आप इसको जूम करें, यहाँ पर कोई यहाँ पर बाउंड्री नहीं है. ये सिंपली यहाँ पर पूरा एक अर्बन एरिया यहाँ पर हमको दिख रहा है. तो ये हम अप्रोक्सीमेशन करते हुए इसको डिजिटाइज करते हैं कि अंदाजा लगाते हुए कि यहाँ किनारे किनारे बॉर्डर चल रहा है, ये पूरा अर्बन एरिया यहाँ पे किनारे किनारे है और उसके आगे डेंसिटी बहुत कम हो रही है अर्बनाइजेशन की. यहाँ पर हमको घर कम दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स कम दिख रही है. ये रेड कलर जो है वो बिल्डिंग्स के लिए यूज हुआ है इसमें. तो यहाँ से एक हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन करते हुए इसको पूरा डिजिटाइज करते हैं. यस मैम. Any other question? So, okay then. आप सब लोग इसका डिजिटाइजेशन का जो टास्क है कंप्लीट करिए, और जितना भी आपको जस्ट दिखाया कि ये पूरा चीज़ों का डिजिटाइजेशन आप लोग करके कंप्लीट करिए. इसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे. अगर नेक्स्ट टर्न पे भी अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो अगेन वो पूरा प्रैक्टिकल सेशन वेट होगा. तो ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग का एट्रीब्यूट डेटा हैंडलिंग है. एट्रीब्यूट डेटा इसी स्पेशल डेटा पर आप ऐड कराते हो. ओके, ये जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक अगला स्टेप नहीं लर्न कर पाओगे. इसलिए आप सभी लोग विद इन अ वीक टाइम नेक्स्ट मंडे आते आते ये सारा डिजिटाइजेशन पॉइंट लाइन पॉलीगन का कंप्लीट करेंगे, प्लस वेक्टर लेयर स्टाइलिंग का जो पीडीएफ दिया गया है उसको रीड करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे. जो डेटा आपने खुद से क्रिएट किया है उस पर वो स्टाइलिंग कराएंगे. एंड देन नेक्स्ट टर्म पे हम लोग थोड़ा बहुत स्टाइलिंग को देखेंगे, प्लस कुछ छोटी चीजें इसमें जैसे
पॉलीगन स्प्लिटिंग कैसे होती है, लाइन मर्जिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें अभी आपने नहीं सीखी है। वो सारी चीजें हम लोग अगले टर्न पे इसकी जो बची हुई हैं उसको सीखेंगे, प्लस एट्रीब्यूट डेटा हैंडलिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। यस मैम, जब हम सेव फाइल लेयर क्रिएट करते हैं तो मैम उसमें ज्योमेट्री टाइप आती है, तो मैम उसमें एक पॉइंट है मल्टी पॉइंट, तो मैम उसका फंक्शन क्या है? मल्टी पॉइंट लाइक सपोज आप कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग को डिजिटाइज कर रहे हैं, है ना? या इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया है बेनीगंज। ओके, अब बेनीगंज में हम लोग किस तरीके से डिजिटाइज करना चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि अलग अलग बिल्डिंग्स जो हैं उनको बाय यूजिंग पॉइंट हम डिजिटाइज करें। ठीक है, बेनीगंज के सारी बिल्डिंग्स को आप पॉइंट के तौर पर डिजिटाइज करोगे। इसी तरीके से सपोज ये तुलसीपुर है इसके बगल में, सो तुलसीपुर की भी सारी बिल्डिंग्स को आप थ्रू पॉइंट डिजिटाइज करोगे। तो यहाँ पर आप क्या हो रहा है, अभी तक आप जो पॉइंट डिजिटाइजेशन सीखा है आपने, उसमें हर एक पॉइंट इंडिपेंडेंट होता है ना? लेकिन अगर आप बेनीगंज के सारे पॉइंट्स को जब डिजिटाइज करोगे, इसमें आप पॉलीगन नहीं यूज कर रहे हो, बल्कि हर एक बिल्डिंग को आप पॉइंट के थ्रू दिखाना चाह रहे हो। लेकिन तुलसीपुर की जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी वो अलग कैटेगरी की होंगी, सैदपुर की अलग होंगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? मल्टी पॉइंट। पॉइंट एक ना होकर के कई सारे होते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, उस केस में हम मल्टी पॉइंट को यूज करते हैं। बट इन जनरल मल्टी पॉइंट का यूज आप कम पाएंगे, सिंपल पॉइंट लाइन पॉलीगन का यूज ज्यादा होता है। मल्टी पॉइंट का ऑप्शन आपको सभी सॉफ्टवेयर में मिलता है, चाहे आप QGIS यूज करें चाहे आप GIS यूज करें, बट इन जनरल हम लोग मल्टी पॉइंट लेते नहीं हैं। तो मल्टी पॉइंट इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर एक कैटेगरी में बहुत सारे पॉइंट्स हों, कैटेगरी वाइज किसी पॉइंट को आप देना है, जैसे एक कई सारे फॉरेस्ट एरिया है और हर एक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज हैं, तो फॉरेस्ट को आप पॉलीगन के थ्रू भी डिजिटाइज कर सकते हो। एक तरीका ये है कि फॉरेस्ट को आप ट्री वाइज डिजिटाइज करो, उसके हर एक पेड़ को आप डिजिटाइज कर रहे हो। इन दैट केस अगेन देयर विल बी मल्टी पॉइंट। या हर एक फॉरेस्ट के नेम वाइज, फॉरेस्ट ए के पॉइंट एक, फॉरेस्ट बी के पॉइंट अलग, उस केस में आप मल्टी पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन? मैम, hello ma'am. Yes. Suppose we have two road with different wide and we have two polyline. Can we increase the polyline wide of the polyline to match with the road? Bhagat, I repeat the question. Suppose we have two road with different wideness, width. Width. And we want to make a two polyline. Can we increase the width of polyline to match with the road in the raster? Yes, not in raster. You are creating the vector data, okay? Yes. And your question is it's interesting question, and you will find the solution of that question in the vector layer styling PDF. Okay? So basically we can do this. Sorry? In short, we can do. Yes. You can change it. Basically, the width of the road is given according to the type of road. You will find that the width of the expressway will be more. If you see the width of the simple street, then the width will be very less. Okay, so width is given according to the importance: expressway, highway, road, street, whatever it is. So there are different categories, and according to that category, the road width is assigned on the map. Now, if we come to this QGIS software or any other GIS software, we will perform the digitization under the common category of road. So you will digitize the highway, expressway, street, everything by the road feature. Later on, if you want to give the width according to the category, okay,
according to the category. Like if you want to grade the expressway more width as compared to main road, and main road more width as compared to the streets. In that case, you will need one additional attribute where you are going to store this information, this category information. After that, by using that, I'm just sharing my screen again. Then by using the symbology, you can assign the color according to it. Like I've done the digitization of one river. I am doing so the ID of first one is 1, the ID of second one is 2. So what I will do, I will go to the properties in symbology. Just wait for a minute. Yes, now you can see my screen. No, ma'am. Just wait. I have shared my screen. Is it coming?
No, ma'am. Share it again. Is it coming now? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, go to the symbology, and at the top of the symbology, there are several options: no symbol, single symbol, categorized, graduated, rule-based, inverted polygon, 2.5D. Okay. So, like suppose I have taken categorized. Okay. And now, based on some value, like I have taken the ID, suppose. Okay. I have taken the ID. You can take any other things. Then on the basis of ID, I have done this classify. And suppose for the one, I will give, say, like the color of this. Okay. And for the second river, suppose I will give dark blue. Okay. Now you can see the difference on the screen. That one river, this river Ganga, is coming in light blue shade, and this random polygon is coming in a dark blue shade. So this is how you can change the color, you can change the width, and everything you can change. It is a rule-based styling that you can give to any of your line or a polygon shape file. Okay. Any other question? I'm not getting any other question. Bhagat, is it clear to you? Yes, ma'am. Okay then. So thank you so much, and we will meet again on Wednesday in our lecture session. The laboratory is over for now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.